Afternoon, students. In the previous class, we have seen this sine law and cosine law. The sine law says that if there is a triangle, then the ratio of the sides with the sine of the angle opposite to it remains constant. That is sine A by sine alpha equals to B by sine beta equals to C by sine gamma. That is the sine law. And cosine law gives the relation between the sides of the triangle and the angles. So if you want to write this third side, C square, so C square will be equal to A square plus B square minus 2AB cos gamma. And if you want to write A square, so A square is equal to B square plus C square minus 2BC cos alpha. And B square can be written as A square plus C square minus 2AC cos beta. So this is the cosine law. And we have used this to find out unknown forces when there are three forces. जब भी तीन forces होंगे F1, F2 और F3 and they are in equilibrium. Equilibrium means what will happen? If they are in equilibrium, then these in तीनों forces हम एक triangle बना सकते हैं F1, F2 और F3. So let us say F1 और F2 के बीच का एंगल अल्फा है, F1 और F3 के बीच का एंगल गामा है, and F2 and F3 के बीच का एंगल बीटा है. So when we write the sine law for forces, तो उसको हम बोलते हैं Lami's theorem. Sine law for forces is Lami's theorem. Simply ऐसा होता है F1 divided by angle between F2 and F3. So F1 divided by sine beta, that is equal to F2 divided by sine gamma, that is equal to F3 divided by sine alpha. That is the Lami's theorem that we have been using yesterday. And अगर इसमें ये वाला यूज करते हैं, cosine rule यूज करते हैं, so that basically gives the resultant vector, third vector. So यहाँ से लिख सकते हैं, अगर F1, F2 पता है, एंगल अल्फा पता है, तो F3 निकाल सकते हैं. So F3 will be root over F1 square plus F2 square minus 2 F1 F2 cos gamma. So this comes from the cosine rule. इसी को अप्लाई कर रहे थे लास्ट टाइम और कुछ क्वेश्चंस कर रहे थे. We'll continue from there and we'll increase the difficulty और कुछ complicated questions में कैसे अप्लाई करेंगे, that we'll see today. So Naman, is this Lami's theorem clear to you? I missed yesterday's lecture because I was not in the group. Yeah, but now can you understand it? इतना ही हमने पढ़ा है Lami's theorem का. हाँ सर, अभी जो आपने बताया वो समझ में आया. हाँ. So make a note of this Naman, and इस concept को use करेंगे अभी. तीन forces अगर equilibrium में है तो हम ये formulas use हाँ करेंगे. सर. So let us say a block is hanging with the help of two strings. रोप अगर चेंज हुआ तो टेंशन चेंज हो जाएगी. That you must remember. सेम रोप में टेंशन सेम होगा अगर बीच में कोई ब्रांचिंग नहीं है, बट अगर रोप चेंज हुआ तो टेंशन चेंज हो जाएगी. सो यहाँ पे दो रोप्स है. दिस इज इस रोप में टेंशन है T1, इस रोप में टेंशन है T2, एंड the value of tension in this rope is 10 Newton and ये एंगल है 37 डिग्री. Okay. And इस ब्लॉक का मास है 2 kg. ब्लॉक का मास है 2 kg. So first thing you have to find out is this the value of tension T2. T2 is the question, and then this angle theta is the question. Figure this out. इसके लिए ब्लॉक का FBD बनाना पड़ेगा. ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बना के T1 इधर टेंशन आएगा, T2 इधर आएगा और नीचे फोर्स लगेगा mg. आई होप sin 37 cos 37 सबको याद है. Sin 37 is 3/5 and cos 37 is 4/5. 4/5.
हाँ, तो एफबीडी ड्रॉ करना है इस पर, फिर इसके बाद सॉल्व करना है। 3 फोर्सेस है यहाँ पे, लामी थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। सी इफ आई ड्रॉ द एफबीडी, सो एफबीडी के लिए सेम चीज I'll use, but I have to cut off all the connections. So टेंशन T1 इस डायरेक्शन में लगेगा, टेंशन T2 इस डायरेक्शन में लगेगा, और mg नीचे के डायरेक्शन में लगेगा। mg की वैल्यू हो जाएगी 20 न्यूटन। तो 3 फोर्सेस हो गए, T1, T2 और 20। ओके, सो T2 और 20 के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ये एंगल थीटा है, तो ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 90 प्लस थीटा। या दिस टोटल एंगल विल बिकम 90 प्लस थीटा। मुझे T2 और 20 न्यूटन के बीच का एंगल चाहिए, दैट विल बिकम 90 प्लस थीटा। सो ये वाला एंगल हो जाएगा 90 डिग्री प्लस थीटा। देन ये 37 है, तो T1 और 20 न्यूटन के बीच का एंगल हो जाएगा 90 प्लस 37। लाइक दिस वी कैन राइट। और ये वाला एंगल लिखना चाहे, ये वाला एंगल हो जाएगा, ये टोटल 180 है, टोटल 180 है, तो ये वाला एंगल हो जाएगा 180, दैट इज पाई माइनस थीटा माइनस 37 डिग्री। मुझे लगता नहीं सारे एंगल्स की जरूरत पड़ेगी। लेट अस राइट इट डाउन नाउ। सो T1 डिवाइडेड बाय इसके ऑपोजिट वाला एंगल, दैट इज 90 प्लस थीटा। सो T1 डिवाइडेड बाय sin 90 डिग्री प्लस थीटा, दैट इज इक्वल टू 20 डिग्री 20 न्यूटन। 20 न्यूटन के ऑपोजिट वाला एंगल है ये sin पाई माइनस थीटा माइनस 37, sin पाई माइनस थीटा प्लस 37। और तीसरा वाला दैट इज T2 डिवाइडेड बाय ऑपोजिट वाला एंगल क्या है, 90 प्लस 37। सो साइन ऑफ 90 प्लस 37। ठीक है। अच्छा नंबर टेल में साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा या साइन थीटा या माइनस कॉस थीटा? साइन थीटा। साइन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा ना। हाँ सर। सी साइन 90 डिग्री सेकंड प्लस क्वार्टर। थीटा, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला पता है हाँ सर। क्या होता है? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए कॉस ए साइन ए कॉस बी। प्लस हाँ साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ओके, तो वो अप्लाई करेंगे तो साइन 90 कॉस थीटा आएगा पहले में, साइन 90 इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस 90 इंटू साइन थीटा। कॉस 90 तो जीरो हो जाता है, तो ये जीरो हो जाएगा। साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा। ये क्लियर है? हाँ सर। ओके, सो ये हो जाएगा T1 बाई कॉस थीटा, ये हो जाएगा 20। अच्छा साइन 180 माइनस थीटा पर प्लस 37 को कॉस नो साइन थीटा प्लस 37 लिख सकते हैं। एंड साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, तो उससे ये आ जाएगा। और T2 डिवाइडेड बाय अगेन साइन 90 प्लस थीटा हो जाएगा कॉस थीटा, थीटा की जगह 37 लिखते हैं। तो मुझे T1 पता है, कॉस 37 पता है, तो T2 आ जाएगा, T2 आ जाएगा, फिर यहाँ से थीटा भी आ जाएगा। अभी सॉल्व करके देखना कितना कितना आ रहा है। T1 की वैल्यू 10 न्यूटन।
इसमें थीटा कैसे मिलेगा? T1 is 10. So this will be 10 by cos theta equals to T2 by cos 37. Cos 37, that is 4 by 5. And from here you can get 20 by sine theta plus 37. So that is sine A cos B. That is sine theta into cos 37. So sine A cos B. 4 by 5 sine theta plus 3 by 5 cos theta. So for first relation, I can write d2 in terms of cos theta. That will give me 8 cos theta, which is all these two. 8 by cos theta. And from second relation, that would be 20 cos theta equals to 8 sin theta plus 6 cos theta. तो यहाँ से आ जाएगा 14 cos theta is equal to 8 sin theta. Tan theta आ जाएगा, tan theta will be 7 by 4. So tan theta आ गया 7 by 4. That means theta आ गया. Or if tan theta is 7 by 4, I can find the value of cos theta. So 49 plus 4, 49 plus 16. That will be root 65. So यहाँ से cos theta आ जाएगा 4 by root 65. So cos theta को यहाँ पे put कर देंगे. 8 divided by 4 by root 65. This will give you root 62 root 65 Newton. Any questions about this? In this question, you have to find T1 and T2, and angle theta, you have to find angle theta such that the tension developed in this string is minimum. Okay, you have to find angle theta such that T1 is minimum.
find theta such that T1 is minimum. Try to solve this, write the equation and try to solve. T1 की value minimum चाहिए. Horizontal forces horizontal forces net zero होना चाहिए, vertical force भी net zero होना चाहिए. Or you can also use Lami's theorem. So, but पहले T1 and T2 find करना है. No, you have to find T1 such that find theta such that T1 is minimum, and then you can find T1 and T2. So for this, if I draw the FPD, I'll just take the component. If this angle is theta, then this angle is theta. If this is 60 degree, then this angle becomes 60 degree. That is, this angle is 30 degree. So to balance out the vertical and horizontal components, the vertical component here it will be T1 cos theta, and here it will be T2 cos 30. That will be equal to force in the downward direction, that will be 10 root 3. So this will be equal to 10 root 3 Newton. And in the horizontal direction, if we take the component, so T2 cos 60 degree, that will come out to be T1 sine theta. From here, you can remove T2. T2 will come out to be as T1 sine theta by cos 60. Cos 60 is half. That will be 2 T1 sine theta. I can put T2 here, and that will give this equation as T1 cos theta. T2 is 2 T1 bad network connection today. Anyways, so T1 cos theta, I have put T2 here. So T1 cos theta plus 2 T1 sine theta, putting T2 here into cos 30, that is root 3 by 2 into 10 root 3. From here, I can write my T1 as T2 cancel. So this will come out to be 10 root 3 divided by cos theta plus root 3 sine theta. So मुझे T1 की minimum value find out करनी है. And यहाँ पे T1 is a function of theta, है ना? So यहाँ पे maximum minimum का concept लगाना पड़ेगा. So T1 minimum चाहिए, that means ये denominator maximum होना चाहिए. अगर मैंने f of theta लिख दिया, f of theta is equal to cos theta plus root 3 sine theta, I have to maximize this. For T1 to be minimum, f theta should be maximum. So df by d theta क्या हो जाएगा? That will be cos theta का differentiation minus sine theta plus root 3 cos theta. This should be 0. यहाँ से आ जाएगा tan theta is equal to one by root 3. I think no, root 3.
tan theta हो जाएगा √3, that means theta should be equal to 60 degree. So when theta is 60, f theta maximum होगा, t1 minimum हो जाएगा. So t1 will be 10 √3 divided by cos theta is cos 60, that is half, this √3 sin theta, that is sin 60, that's √3 by 2, half plus 3 by 2, that is 2. So 5 √3 आ जाएगा. So t1 5 √3 Newton आ गया. So t2 find out कर सकते हैं इस relation से. I know t2 is equal to 2t1 sin theta, that is sin 60. So 2t1 sin 60 is √3 by 2. So that will be 15 Newton. Like this we can solve. ऐसे और भी questions आएंगे जब हमें function की value minimum चाहिए और numerator में कुछ भी ना हो तो denominator को maximize करते हैं. या numerator में maximum चाहिए, in that case अगर numerator में कुछ भी ना हो तो denominator को minimize करते हैं. These are the tricks, the mathematical tricks जो हम physics के problem में use करते हैं. Hope this. So वो tan theta equals √3 कैसे आ गया? इसको 0 पुट किया ना, सॉल्व करके देखना है इसे. sin थीटा उधर चला जाएगा, sin थीटा पे cos थीटा is tan थीटा. Okay सर समझा. स्टार्टिंग में T2 का वैल्यू कैसे आया? ये वाला इक्वेशन या ये फाइनल वाला? स्टार्ट. ये वाला. So see, left वाला force will be equal to right वाला force. So मैंने T2 का component horizontal में लिया तो that will be T2 cos 60 and T1 का component horizontal में लिया that will be T1 sin theta. T1 cos theta हो जाएगा ऊपर की direction में and T1 sin theta will be in the leftward direction. So left वाला force should be equal to right वाला force. That is with it. और कोई force नहीं है horizontal. Okay, now we'll move ahead. So suppose the question is like this. The pulley, and there is another pulley here. And the rope will do. और यहाँ पे एक block है. This block का mass is M1 block का mass is 10 kg. And there is another block here. जिसका mass है M2. So the question is, find M2 such that system remains in equilibrium. Find M2 such that system remains in equilibrium. Means कोई भी net force ना हो, net force हमेशा 0. And after that, suppose tension in this wire is T1 and tension in this wire is T2. And the force applied by this rod
that is T3. After that, find T1, T2 and T3. Okay, तो इसका एफपीटी बनाना है, दोनों पुलिस का एफपीटी बनाना है. If we call this pulley as pulley 2 and this is pulley 1, तो चारों का एफपीटी बनाना है, दोनों पुलिस का, दोनों मासेस का. एंड सब कुछ इक्विलिब्रियम में है, सो नेट फोर्स 0 होना चाहिए सारी डायरेक्शंस. Draw the FPD and solve this. Anyone got the value of M2? What's the value of M2? Aditi, did you get the answer? No, sir. Let us first draw the free body diagram for each case. So if I draw the free body diagram of this mass, so downwards will be M1G, और ये जो rope है इसमें ये same rope है, so इसमें tension let us call it T1. Then इसका अगर फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे पुली 2 का, सो पुली तो मासलेस है, पुली का मास नहीं दिया होता तो हमेशा मासलेस कंसीडर. सो यहाँ पे T1 डाउनवर्ड्स and T3 will be upwards. Then we'll draw the diagram of this pulley P1. Pulley massless है and यहाँ पे tension T2 है. So T2 in the downward direction and T1 in the upward direction. So these are the action reaction pairs. ये वाला T1 और ये वाला T1. और M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो M2G डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंड ये इस रोप से अटैच्ड है तो ऊपर फोर्स लगेगा T. And everything is in equilibrium, so सारे ऊपर वाले forces will be equal to the नीचे वाले forces. So T1 is equal to M1G, T2 equals to M2G, then 2T1 equals to T2, T3 is equal to 2T1, and we can solve this. Okay. Try to solve this now. Once done, tell me the answer. M2 is not 19 kg. 9.8 लिया गया G. G की वैल्यू 10 देनी है and M2 19 नहीं आएगा. Have we got the right answer? Yeah. Aditi also got the right answer. Kushagra, Arjun, tell me your answer. यहाँ से सॉल्व करेंगे तो T2 की वैल्यू आ जाएगी डायरेक्टली. T2 will be 10 into G, that will be 100 Newton. यहाँ से T2 आ गया, so T2 आ गया तो T1 आ जाएगा. No, wait. T2 100 Newton नहीं है. T1 will be 100 Newton. T1 will be 10 G, that is 100 Newton. Yeah, Nirmita and Aditi's answer is correct.
Kushagra and Arjun, you're not responding. And Naman, कहाँ पे problem आ रही है? Just tell me. T1 100 Newton आ गया, तो T3 आ जाएगा 2T1. That will be 200 Newton. And T1 again 100 Newton है, तो T2 भी आ जाएगा 200 Newton. T2 200 Newton आ गया, तो T2 should be equal to M2G. यहाँ से M2 निकाल सकते हैं. M2 will be equal to T2 by G. That will be 200 by G. So 20 kg आ जाएगा. Like that. That's all. Next question पे आता है. Suppose there is an inclined plane like this, और inclined plane के end पे there is a pulley, and pulley से mass attached है on this side and this side. This mass is given to us as 3 kg. और ये find out करना है M2. The angle which the inclined plane makes with the horizontal, this angle is given as 30 degree. So find M2 such that system stays in equilibrium. Find M2 such that system stays in equilibrium. Solve it. Easy question है. एक ही रो पे तो टेंशन सेम ही होगा. FVT ड्रॉ करना है दोनों का, and then you have to find the value of M2. So for this case, the answer will be 6 kg. To draw the FVT, then tension will be equal to M2G sine 30. So that will result in tension should be here equal to 630 Newton. That will result in MT is equal to 6 kg. What if instead of along with this, I'm applying another force of 15 Newton in the upward direction? Then what will be the value of M2 such that it stays in equilibrium? Six kg stuff. Now, in this case, what will be the value of M2? There is another force F that is equal to 15 Newton. In this case, the tension will be reduced by 15 Newton. So M2 will become coming out as 3 kg. So 2 students send me the answer. RV and Yandan. Kushakra, are you getting the answer?
Tushar, can you Yes, hear sir. me? Just a second. Yeah. Naman, free body diagram फर्स्ट इस वाले क्वेश्चन का बन गया था, आंसर आ रहा है? तो टेंशन मिल गया था मुझको, उसके बाद M2 इज इक्वल टू 6 kg नहीं आ रहा। अच्छा, तो पूछना चाहिए ना अगर नहीं आ रहा तो। सर तो वो मैं कर रहा था। इसका एफबीडी बनाएंगे तो नीचे आएगा M2G, नॉर्मल फोर्स लगेगा सरफेस के परपेंडिकुलर और टेंशन लग रहा है इस डायरेक्शन। तो मैं M2G का कंपोनेंट ले लूंगा, ये एंगल 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल भी 30 डिग्री हो जाएगा। तो M2G का कंपोनेंट इधर आ जाएगा M2G cos 30 और इस डायरेक्शन में आ जाएगा M2G sin 30। तो दोनों डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम होना चाहिए। तो टेंशन की वैल्यू आ जाएगी M2G sin 30 और यहाँ से कुछ आने नहीं वाला, नॉर्मल फोर्स निकालना है तो ये यूज कर सकते हैं, नॉर्मल फोर्स इज M2G cos 30 वो लिख सकते हैं। तो टेंशन पता चल गया, तो M2 आ जाएगा G sin 30, G की वैल्यू 10। ठीक है, हाँ सर। ठीक है। इसके बाद आते हैं हम डायनामिक्स वाले पार्ट पे। अभी ब्लॉक्स के पास सिर्फ ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, दे विल हैव सम एक्सेलरेशन। So we're going to start with that part. So the simple relations ऐसे लिखते हैं that Newton's second law of motion, that F vector is equal to mass into acceleration vector. तो फोर्स को हम तीन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, that is force along x direction, net force along x direction, या फिर मुझे ऐसा लिख देना चाहिए sum of all the forces that is equal to mass into acceleration. So summation of forces in x direction net force हो जाएगा, that is summation of forces in y direction plus summation of forces in z direction. I can remove the vector, it's already fx fy is fz. That will be equal to mass into acceleration in x direction plus acceleration in y direction plus acceleration in z direction. तो तीनों का acceleration सिर्फ x, y, z individual forces पे ही depend करेगा. So I can write it like this: summation of forces in x direction is equal to mass into acceleration in x direction. In summation of forces in y direction, that is equal to mass into acceleration in y direction. Then summation of forces in y direction, the z direction, is equal to mass into acceleration in z direction. Simple, sir. This is your Newton's second law. Net force is equal to mass into acceleration. One form of Newton's second law. एक और है F is equal to delta P by delta T, उसको भी पढ़ेंगे बाद में. So simply अगर ब्लॉक दिया हुआ है यहाँ पे, just do a simple question based on this. So there are two blocks, suppose एक 5 kg का ब्लॉक है and इसके ऊपर 2 kg का ब्लॉक, and I am applying force on 5 kg block. The value of the force is, let us say, 100 Newton. तो सबसे पहले काम करना है कि आई नो दैट कि ये ब्लॉक मूव करने वाला है, ब्लॉक मूव करेगा तो एक्सेलरेशन आएगा. तो दोनों ब्लॉक्स का एफबीडी बनाते हैं. 5 kg वाले ब्लॉक का एफबीडी बनाएंगे. सो इट विल बी लाइक दिस. नीचे से कॉन्टैक्ट वैसे mg लगेगा पहले, तो mg दैट विल बी 50 न्यूटन. फिर ऊपर से नॉर्मल फोर्स लगेगा 2 kg ब्लॉक वाले का, कॉल इट n1, और नीचे से नॉर्मल फोर्स लगेगा सरफेस का, कॉल इट n2, और आगे एक फोर्स लग रहा है F, दैट इज 100 न्यूटन.
और छोटे वाले ब्लॉक का वीडियो बनाएंगे 2 kg ब्लॉक वाले को। सो नीचे लगेगा mg और एक ही जगह कॉन्टैक्ट फोर्स है, दैट इज और दैट विल बी कॉल्ड n1। तो सी यहाँ पे वर्टिकल में फोर्स है n1 माइनस, वर्टिकल में कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगा, सिर्फ फॉरवर्ड में एक्सेलरेशन। बट यहाँ पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है, तो 2 kg वाला ब्लॉक वहीं पे रहेगा। यहाँ पे देखा जाए तो हम लिख सकते हैं n2 minus n1 minus 50 is equal to 0. This is summation of force in y direction. Or summation of force in x direction. This will be 100. तो ये ब्लॉक एक्सेलरेट करेगा in the rightward direction. कि एक net force है in the rightward direction. This will be equal to mass into acceleration. यहाँ से acceleration आ जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अच्छा, दोनों ब्लॉक्स के बीच कोई भी फोर्सेस नहीं है हॉरिजॉन्टल में, सो ये वाला ब्लॉक जो है ये रेस्ट में रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। तो ये वाला ब्लॉक जब आगे निकल जाएगा तो ये बस फॉल कर जाएगा इतना डिस्टेंस, बिकॉज़ देयर इज नो नेट हॉरिजॉन्टल फोर्स इन द टू केस ब्लॉक। तो ये वाला सरफेस जो है हमने स्मूथ लिया था, ऐसा नॉर्मली नहीं होता। ये वाला सरफेस हमने स्मूथ लिया था इसलिए ऐसा हुआ। 5 kg वाला ब्लॉक जब पुल करेंगे तो 2 kg वाला ब्लॉक वहीं पर रुक जाएगा, जस्ट ड्रॉप डाउन। तो ऐसे दोनों ब्लॉक्स के लिए fx fy समेशन ऑफ fx समेशन ऑफ fy करते हैं, एंड अगर there is acceleration then we write that is equal to mass into acceleration, like that. ठीक है, any questions about this? कुछ और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं इसके बेसिस पे। तो 2 kg ब्लॉक और ये एक रोप से अटैच्ड है विद अनदर ब्लॉक, इसका मास है 3 kg और एक नेट फोर्स लगा रहे हैं इन दिस डायरेक्शन, दैट इज 10 न्यूटन। Find acceleration of each block and tension in this room. So can you scroll up? Yeah. But the answering track was it's completed. Try not to take more than 5 minutes for each question. और हाँ, डायरेक्टली सॉल्व नहीं करना है, पहले वीडियो बनाना है उसके बाद फिर सॉल्व। नेट पे 10/3 इज नॉट द राइट आंसर, वीडियो बना के फिर सॉल्व करना है। नेट फोर्स इज नेट फोर्स राइट में तो 10 न्यूटन है, बट लेफ्ट में टी भी होगा, सो 10 minus t is equal to 3a लिखेंगे। So but t की वैल्यू 10 न्यूटन होगी ना?
नहीं, टी की वैल्यू 10 न्यूटन नहीं होगी। दोनों का एफईडी बना के फिर लिखते हैं, फिर सॉल्व करें। ये एफईडी ड्रॉ करते हैं 3 kg वाले का। In the right it will be F, that is 10 Newton. लेफ्ट में फोर्स लगेगा T, नीचे लगेगा 30 न्यूटन और ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स, कॉल इट 10। सो ऊपर नीचे तो कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा A। सो हम लिख सकते हैं फोर्स इन एक्स डायरेक्शन हो जाएगा 10 न्यूटन माइनस T, दैट विल बी 3A। यहाँ से ये रिलेशन आ गया। 2 kg वाले ब्लॉक का एफईडी बनाएंगे। सो राइट में एक फोर्स लग रहा है T और नीचे लगेगा 20, दैट इज 2 mg, और ऊपर लगेगा नॉर्मल फोर्स है। तो इसका भी, क्योंकि ये ब्लॉक आगे जाएगा तो ये ब्लॉक भी साथ में आगे जाएगा, ये रोप से कनेक्टेड, तो इसका भी एक्सेलरेशन आगे होगा A। तो राइट डायरेक्शन में सिर्फ एक ही फोर्स है T विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, नेट फोर्स T है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं। 10 minus T is equal to 3A, that is your first equation, and second equation is this, T is equal to 2। तो यहाँ से एक्सेलरेशन आएगा। Barbie, your answer is correct. Very good. फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन भी बताना है, एंड देन यू हैव टू कैलकुलेट द टेंशन आल्सो। एक्सेलरेशन और टेंशन दोनों कैलकुलेट। Yes, Nirmit, your answer is right. Baaki students, you have to solve it and send me the answer in chat. Tension is correct. Barbie, your answer is correct. दो ही students answer कर रहे हैं। The third question I have, right में लगने वाला force, that is 50 Newton, and in the leftward direction I have force that is equal to 10 Newton. This is F1, this is F2. In this case also you have to find the acceleration, tension in 1 and tension in 2. So in this case, the acceleration will come out to be 20, that is 2 meters per second square. And tension in the first one, that will be 10. And in the second one, it should be 14. In this case, yeah. Okay. In this case, acceleration will come out to be सर 4। 4 is correct. सर बाकी का अभी निकालना है एक्चुअली। Okay, take your time, solve. 6 होगा ना? लास्ट वाला, यहाँ पे एक और फोर्स है 10 न्यूटन, that you should consider. Sir, I did consider.
चल सॉल्व करते हैं। सो एक भी ड्रॉ करते हैं 5 kg ब्लॉक का। इधर फोर्स लगेगा F1, इधर फोर्स लगेगा T1 और एक्सेलरेशन आगे की डायरेक्शन में दैट विद डैश, और नीचे 50, ऊपर लेट अस से नॉर्मल फोर्स N1। 3 kg ब्लॉक के लिए नीचे 30, लेट अस से फोर्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन इज N2, इधर टेंशन लगेगा T1 और इस डायरेक्शन में टेंशन लगेगा T2, और इसका भी एक्सेलरेशन राइट में ही होगा, तीनों कनेक्टेड। 2 kg ब्लॉक के लिए दिस विल बी टेंशन T2, यहाँ पे फोर्स लगेगा F2 एंड 20 नीचे और नॉर्मल फोर्स N3। सो वाई डायरेक्शन में तो सारे फोर्सेस बैलेंस्ड है, नॉर्मल फोर्स निकल जाएगा वाई डायरेक्शन में, इक्वेशंस बैलेंस करेंगे। एक्स डायरेक्शन के लिए यहाँ पे लिख सकते हैं F1 माइनस T1, राइट वाला फोर्स, राइट में एक्सेलरेशन तो राइट वाले को पॉजिटिव देंगे, F1 माइनस T1 दैट इज इक्वल टू 5। ठीक है, F1 की वैल्यू गिवन है ना, दैट वी कैन पुट लेटर हियर T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3a, और यहाँ से आ जाएगा T2 इज इक्वल टू T2 माइनस F2 इज इक्वल टू 2a। So F2 की वैल्यू पुट कर देते हैं, T2 माइनस 10 इज इक्वल टू 2a, देन T1 माइनस T2 इज इक्वल टू 3, एंड यहाँ पे 50 माइनस T1 इज इक्वल टू 5। अच्छा, एक छोटा तरीका है, तीनों इक्वेशंस को अगर ऐड कर दिया जाए ऑन देयर साइड्स, it directly gives us the acceleration. So equation 1 plus equation 2 plus equation 3 दोनों को ऐड कर दिया जाए, so that will be 50 minus T1 is equal to 5a। इसी के नीचे दूसरा इक्वेशन लिख लेते हैं, T1 minus T2 is equal to 3a। इसी के नीचे तीसरा इक्वेशन लिख लेते हैं, T2 minus 10 is equal to 2a। और तीनों को ऐड कर दिया जाए तो T2 T2 T1 T1 कैंसिल, that gives me 40 is equal to 10a। तो एक्सेलरेशन आ जाएगा 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा, एक शॉर्ट ट्रिक है एक्सेलरेशन निकालने के लिए, क्योंकि पूरा सिस्टम एक सिंगल बॉडी की तरह मूव कर रहा है, सबका एक्सेलरेशन सेम है, तो मैं नेट फोर्स निकाल सकता हूँ। नेट फोर्स हो जाएगा 50 माइनस 10, 50 माइनस 10 नेट फोर्स हो गया 40। सो 40 न्यूटन फोर्स लग रहा है 5 6 7 8 9 10 केजी मास पे, तो एक्सेलरेशन 4 आ जाएगा। तो ऐसे डायरेक्टली भी कैलकुलेट कर सकते हैं। नेट फोर्स 40 है पूरे सिस्टम पे, और कोई फोर्स नहीं है हॉरिजॉन्टल में, सिर्फ 50 माइनस 10 दैट इज 40, और यही इस बॉडी का एक्सेलरेशन है। Find T1 and T2 now. Sir, I actually messaged you the answer. Get it recently. Tell me T1 कितना आ रहा है?
Sir, 30, And T2? 18. So 50 Sir, minutes. actually, I tried messaging on chat, but it is saying that you are not in the meeting, so I'm not able to send the answer there. Okay, no issue. You can just tell me the answer. 5A40. So T1 is 10 Newton now. And T2 will be 18. Sir, T1 30 आया. Yeah. T1 will be 30. T2 correct? हाँ sir. Okay. So it will be like this. निर्मित क्लियर हुआ ये? हाँ सर. Okay, next question we have a 2 kg block और ये लोग पुलिस से पास होते हुए is attached to another block of 3 kg. So let us say tension in here is T और ये नीचे जा रहा है acceleration A से. ये नीचे जाएगा acceleration A से तो ये भी आगे जाएगा acceleration A से. So find the value of A and T. In the first case, acceleration will be how much? It should come out as 6 meters per second. And tension should be equal to 12 Newton. Harvey and Nilmith got the right answer, as well as in the second case, acceleration would be 2 meters per second square. T2 should be 2 Newton. No, 4 Newton. No, T2 should be 2 Newton. And T1 should be 4 Newton. T1 should be 4 Newton. No? 10 minus. Okay, 10 minus. That should be 8 Newton. Again, Barbie and Nilmith got the right answer. Aditi, if you can't send messages in here, you can send on WhatsApp. I will check from there. Other students also, if you are facing problem sending messages in here, you can send answers on WhatsApp. Okay, any questions from this? All right then, we'll do some more questions related to police. In the next question, I have a pulley. So pulley is massless ना, अभी के लिए सारे पुलिस जब भी गिवन होगा तो massless ही कंसीडर करें, कोई मास नहीं होगा पुlley का, और ना तो फ्रिक्शन होगा. फ्रिक्शन अभी बाद में पढ़ेंगे. So on this side, there is a mass m1, and on this side,
there is another mass M2. M2 is given to you as 4 kg and M1 is given as 2 kg. So of course 4 kg वाला ये नीचे एक्सेलरेट करेगा with acceleration a and ये वाला ऊपर एक्सेलरेट करेगा with acceleration a. दोनों का acceleration same होगा but direction different होगा. Let us say tension in here is T1 और rod जो force लगा रहा है pulley पे call it F. So you have to find acceleration find out करना है, T1 find out करना है and F find out करना है. Solve this. Simple है, FPD draw करना है, equation solve करना है. So what is F? जिस रॉड से पुली अटैच्ड है वो कितना फोर्स लगा रहा है पुली. रॉड में जो टेंशन है दैट इज एफ. सो एफ इज टेंशन इन रॉड. In the first case, if you draw this FPD here, so for M1, mass is for 20, mass is 2 kg, so this is 20, and T1 tension upwards, acceleration will be upward. So I can write upward acceleration है, so T1 minus 20, that will be equal to 2A. Let me clear this side. Similarly, for M2, you can draw FPD. Weight mass for 4 kg है तो नीचे 40 न्यूटन लगेगा. Tension will be upward, that will be T1. और acceleration downward है. जिधर acceleration उधर positive लेते हैं. So this will come out to be 40 minus T1, that is equal to 4A. Net force is equal to mass into acceleration. यहाँ से दोनों को solve करेंगे तो acceleration आ जाएगा 2 by acceleration will be 10 by 40 minus 20, 20 by 2, that is 10 by 3 meter per second. फिर यहाँ से T1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं. एंड इफ यू ड्रॉ द FPD ऑफ पुली, सो पुली का FPD ऊपर फोर्स लग रहा है F और नीचे फोर्स लग रहा है T1, 2T. So F will be equal to twice of T1. So T1 will be 40 minus 4, 80 by 3. Twenty plus 60, 70, 80 by 3 Newton. T1 is 80 by 3 Newton and force will be 160 by 3. Okay, like this you can draw FPD and solve for these cases. So मेरा T50 by 3 आ रहा है. कैलकुलेट करिए. यहाँ पे T1 को लिख सकते हैं 20 plus 2A. A आया 20 by 3. 23 से 60 plus 20, 80 by 3 आएगा. Do the calculation again. हाँ सर.
For the second question, you can again solve for this like this 80 minus 26t by 6. Acceleration will be 10 meter per second square. Acceleration is 10. Okay. And t1, that will be 80 minus, yeah, t1 will be 40. And F would be again 80 Newton, twice of the original force. Barbie and Elbit both got the right answer. So question in this one. For this question, acceleration will be thirty by 7. So T1 will be two hundred by 7. Then F will of course will be 400 by 7 Newton. And T2 that will be
400 by 7. No, T2. That will be 40 by 7. Here the acceleration should be that will be 2.5 meter per second. Yeah. And tension. Tension should be 60 Newton. So it should be 45. yeah. It should be 45 Newton. So again, here if you draw the FPD, normal force M1G, and you'll take the components. The tension would be in this direction. So equation will come out like this: T minus M1G sine theta, that is sine 30, that is equal to M1A. And for this, the FPD will be like this: M2G in the downward direction, upward direction tension. ये इस डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है इसलिए A, and ये नीचे के डायरेक्शन में एक्सेलरेट कर रहा है. So that will give me M2G minus T is equal to M2. From here we can calculate the value of acceleration, that is 2.5, and tension as 45 Newton.